Hi everyone, this is Saloni, your host here, and we have a beautiful trainer here, Kamalpreet. So I hope आप सभी आज के सेशन के लिए काफी ज्यादा excited होंगे. So as we all know that today's session is going to be all about Churros. So I hope everybody is really excited for it. And अभी मैं आपको बताऊंगी कि Churros क्या होते हैं, फिर कमलप्रीत आपको अच्छे से बताएंगी कि क्या होता है. मुझे तो इसे थोड़ा सा पता है. So we have our trainer here, Kamalpreet. Kamalpreet, can you please say hi to everybody here? Hi everyone, how are you all? And how excited are today to make this churros? Yes, I think Churros काफी मैंने कभी मतलब बनाए नहीं है, but yes, I have seen them and I have eaten them and I really love them. So अगर आपको मैंने इसमें अंदर I think चॉकलेट की पाइपिंग होती है, so I really love those जिसमें चॉकलेट की पाइपिंग होती है. It's like amazing. So yes, everyone, I hope that you all are really excited for today's session. I'm going to quickly give you a brief introduction that what we are going to learn. But before going there, I will let you know कि जो भी PDF हैं या products हैं वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपडेट हो चुके हैं. अगर आप चाहें तो आपके ऊपर जाकर के PDF और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. इस कोर्स की जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी. अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ऐप के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. प्लस अगर आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया था तो रजिस्ट्रेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं. ओके. एंड आज का कोर्स जो है उसके जो रिकॉर्डिंग्स PDF और सर्टिफिकेट होगा उसके लिए आपको हमें 5 रुपीज पे करना पड़ेगा. तो आप जा करके चेक कर सकते हैं. ओके. तो आई होप एवरीबडी इज रियली एक्साइटेड. एंड आज का जो सेशन होने वाला है वो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बाइलिंगुअली होगा. दोनों ही लैंग्वेजेस में उसको कंडक्ट कराया जाएगा, वेदर इट्स इंग्लिश और हिंदी, सो दैट नोबडी हैज एनी इश्यूज रिगार्डिंग द लैंग्वेज हियर. सेकेंड थिंग इज कि आज आप पूरा का पूरा जो सेशन है उसमें स्टार्टिंग से यानी कि उसके बैटर से लेकर लास्ट गार्निशिंग तक या कैसे आप उसको किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे वहां तक आप हर चीज सीखेंगे बाय आवर ट्रेनर कमलप्रीत. सो आई होप एवरीबडी इज रियली एक्साइटेड. So yes, Kamalpreet, over to you. Thank you so much for the introduction, Saloni. So we are going to make churros today. So do you know what is the origin country of this churros? So कितने लोगों को यहाँ पे पता है? So कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि origin country क्या है churros की? First of all, हम begin करने से पहले ये सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. Do we have comment option here, Saloni? Yes. So Okay. we have just give me a second. Yes, so we do have comments coming all over here. So first of all, अभी तो सब everybody was saying that they are excited for today's session. Let's see कि किसको पता है कि आज कौन सा मतलब हिस्ट्री क्या है क्यूरोस की एंड कहाँ से वो आते हैं. Yes. So till then, Kamalpreet, you can let me know कि आपको क्यूरोस मतलब आपको कैसे लगते हैं. I found this very amazing. These are very easy to make and इसको आप different dips के साथ serve कर सकते हो. So बहुत ही amazing लगता है. नहीं है कोई dips, that's totally okay. Simple, get some ice cream and you can enjoy with it. So summers में तो favorite है. जब भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ different, कुछ unique and top of that something crunchy. So this is an amazing dessert. तो आज पता ही लग जाएगा आपको कितना इजी है बनाना. तो आप भी आई थिंक बनाने वाले हो ये एंड समर्स में आप आइसक्रीम के साथ एंजॉय करने वाले हो. Summers में we'll have it with ice cream and ठंडी में we can have it with Nutella. With Nutella, yes. Yes. And I or you think can have with hot chocolate dip. Oh yes, oh my god, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा उसके साथ. Okay, so I think अभी किसी को पता नहीं है कि कहाँ से basically churros का origin हुआ है. So please let us know. Okay, this is a Mexican as well as a Spanish dish. ये Mexican भी है और Spanish भी है. Okay. Okay. So आज हम दो countries की जो dish है वो सीखने वाले हैं. That's great. And this is very famous in Europe also. Like in Europe, you can get it very easily. Oh yes, people are saying it is from I think it is from Italy. So I think Europe में तो काफी famous है. हाँ, Yeah. यूरोप में बहुत फेमस है तो यूरोप में बहुत इजीली मिलती है.
Okay, let's begin. Can you Yes. please give the spotlight, Saloni? Yeah, sure. तो हम यहाँ पे start कर रहे हैं बनाना. Okay, so first of all, I am taking 1 cup of water and 2 tsp of butter. Kamalpreet, just a sec. I think Yes. पता नहीं क्यों मुझे मेरी पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. Just a sec, let me check. Okay. No, I think it's working fine. Okay. This is 1 tsp and this is 2 tsp. So we are taking Butter butter can here, be right? cold. Yes, this is salted butter. You can take cold butter also. You can take it room temperature also. Room temperature is just that it would be easy to measure. आप ठंडा भी ले सकते हो, रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हो. रूम टेम्परेचर पे ये होगा कि मेजर करना इजी हो जाएगा. एंड मेल्टेड भी ले सकते हो बिकॉज एट लास्ट ये मेल्ट ही होने वाला है. Yes. So as you can see, we have taken 1 cup of water here. उसमें हम लोगों ने 2 tablespoon यहाँ पे ऐड किया है butter. And butter 2 जो आपका रहेगा tsp. वो आपका 2 TSP हम लोगों ने लिया है. एंड आप उसको रूम टेम्परेचर या फिर मेल्टेड भी ले सकते हैं. Yes, Kamalpreet. Now I'm adding 1 TBSP of sugar. एक TBSP मैंने शुगर ऐड करी है. कोई भी शुगर ले सकते हो, पाउडर, कैस्टर, नॉर्मल शुगर विच यू यूज एट होम. यहाँ पे इस स्टेज पे कोई भी शुगर ले सकते हो. ओके, एंड दिस नीड्स टू बी डन ऑन लो फ्लेम. ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये आपको लो फ्लेम पे करना है. Okay, so TSP means teaspoon and TBSP means tablespoon. Okay, TSP छोटा होता है, tablespoon बड़ा होता है. So we have taken 2 teaspoons of your butter and we have taken 1 tablespoon of your salt here. Sugar here. Just a second, there And is ये जो भी problem चीजें with आप my देख रहे हैं ये induction. हम सबको लो फ्लेम पे कर रहे हैं. Okay, this is not capturing the whole space. Give me a moment, Saloni, okay? Sure. Nadira, we have taken 2 teaspoons of butter. 2 teaspoon हम लोगों ने बटर यहाँ पे लिया है. एंड डोंट वरी लेडीज, ये सारी की सारी चीजें पीडीएफ में लिखी हुई हैं फुल प्रोसेस के साथ. तो अगर आप चाहें तो आप ऐप के ऊपर जाकर के पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. आपको ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस उसमें आपको वो भी मिल जाएगा. अगर आपने कोर्स रजिस्टर भी नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगी. तो आप पूरा का पूरा पीडीएफ प्लस प्रोडक्ट वो सारी चीजें आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी. आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं. नो शर्मा, इट इज लाइव फॉर नाउ एंड बाद में इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको मिल जाएगी उसके हमारे ऐप के ऊपर. तो आज का जो सेशन है दैट इज लाइव फॉर नाउ एंड देन उसके बाद वो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा. ओके. Okay, give me 2 minutes, Saloni. This is not working on the induction. So I'm just replacing it with something else. So ये हमें मेल्ट करना है बटर और शुगर लो फ्लेम पे. तो मैं जस्ट एक बार यूटेंसिल चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये इंडक्शन के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है. श्योर. नो कमल, जो आपका क्यूरोज होते हैं वो एक स्वीट डिश होती है.
सो अगर हाँ आप जी। च्यूरोज में शुगर की जगह सॉल्ट डाल देंगे तो वो स्वीट डिश नहीं रह जाएगी, इसलिए यू कैन नॉट रिप्लेस द शुगर विद द सॉल्ट बिकॉज इट्स सपोज टू बी अ स्वीट डिश. Okay, so Kamalpreet, there is a question here Yes. that instead of the sugar, can we use jaggery powder also? Yes, you can use jaggery powder also, but in the same quantity. Okay. ठीक है. So yes, Suhena, you can use jaggery powder also, but remember, as we have used 1 tablespoon of sugar, you are also supposed to use 1 tablespoon of your jaggery powder. I don't know Or what can we just also use the happened. coconut sugar? What just happened? Why? Kamalpreet, I think your camera is off, this one. Yeah, I have offed it. I don't know why nothing is working on induction. Although I have worked with these utensils every day. Kuni, at times it happens. Yes, sure. I will quickly repeat the whole process that we have done till now. अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीजें की हैं, मैं एक बार जल्दी से repeat कर देती हूँ. So till now, what we have done is we have taken 1 cup of water. In that 1 cup of water, we have added 2 tablespoons of just a sec. We have added 2 teaspoons of butter, and then we have added 1 tablespoon of sugar. ठीक. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, हम लोगों ने 1 कप ऑफ वाटर लिया है, उसमें हम लोगों ने ऐड किया है 2 टीस्पून्स बटर एंड उसमें हम लोगों ने ऐड किया 1 टेबलस्पून हमारा शुगर. अगर आप शुगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप जो जैगरी पाउडर होता है वो यूज कर सकते हैं. जैगरी पाउडर यानी कि जो गुड़ होता है, आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं. ओके. And then once you have added all these things, you are going to melt it down on low flame. Low flame पे आप ये सारी चीजों को melt down कर देंगे. Okay. And yes, the butter that you are going to take, that can be at room temperature also, and you can also have the butter like in the liquid form also, because anyhow it is going to melt only. Okay. So if you have any more questions, please let us know. There is some problem with the induction. It's not working. So तब तक कमलप्रीत गैस पे उसको मेल्ट कर दे रही है एक बार, क्योंकि इंडक्शन काम नहीं कर रहा है. ओके. So if you have any more questions, let us know. Hi Janvi, how are you? Just give me a second. ओके. कमल, आप बटर की जगह ना बटर ही लीजिएगा. देसी घी के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उसमें एक अलग सा फ्रेग्रेंस होता है एंड कभी कभी वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जब हम बटर बोल रहे हैं तो आप प्लीज बटर ही यूज करिए, देसी घी को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा. Okay, what I'm going to do now, I'm going to just melt this in the microwave. ओके, श्योर कमलप्रीत. Although this is not the proper कम way. हाँ जी, मैं 1 मिनट वीडियो ऑन कर रही हूँ. Give me just 1 second. या श्योर. बिल्किस, यस यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स. आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, बट आपको रिकॉर्डिंग्स ऐप के ऊपर मिलेंगी एंड ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. ओके. संजना, डोंट वरी, अभी पूरी चीजें रिपीट हुई थी. आप एक बार रिकॉर्डिंग्स में जाकर के चेक कर सकती हैं. पीडीएफ में ये पूरा प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकती हैं. ओके. कमल, आप इसको सॉल्ट के साथ इसलिए यू कैन नॉट रिप्लेस इट विद सॉल्ट बिकॉज churros are supposed to be sweet dishes. Like, you are not going to make rasgulla out of salt, right? You're always going to use sugar only. So in the same way, when it comes to churros, they are sweet dishes. That is why you cannot change, like you cannot replace the salt with the you cannot replace the sugar with the salt. Okay.
No, it will not be available on the YouTube. It will be available on our app. The link of the app is given in the description box. You can go there, check it out. Okay. Okay. Okay, so do we have any more questions? Yeah, let's do it. Okay, I don't know what's the problem with induction. I have tried many different utensils, but okay, let's work something on. So क्या किया है मैंने अभी पानी ना माइक्रोवेव में गरम कर लिया है. I'll still try if my induction gives something to me, but no, it's not giving. Okay, so let's start the procedure again. So यहाँ पे मैं फिर start कर रही हूँ पूरा procedure. Please, you can watch it carefully. So I'm taking 1 cup of water, which is hot. Okay. And I am adding melted butter now. आपको बटर इसी में ऐड करना है और लो फ्लेम पे कुक करना है. You have to add butter in this water only with sugar and you have to melt it on low flame. I'm adding 1 TBSP of sugar. So 1 cup में 1 TBSP मैंने sugar ऐड करी है. And 2 TSP I am adding this melted butter. So mix it till the time your sugar is melted and your butter is also melted on low flame. So आपको इसको तब तक mix करना है जब तक आपका butter melt हो जाए और आपकी sugar भी melt हो जाए. Okay, so my sugar and butter is melted. I will add flour now. अब मैं इसी में लो फ्लेम पे है मेरा गैस और मैं इसमें अब फ्लावर ऐड कर रही हूँ which is 3/4 cup. I'm going to add the flour which is 3/4 cup. So you can see here हमारा जो गैस है वो इस वक्त लो फ्लेम पे ही है और लो फ्लेम पे रहते हुए ही आप उसमें मैदा ऐड करेंगे. जो मैदा होगा वो 3/4 कप होगा. 3/4 कप आप उसमें मैदा ऐड करेंगे. Just mix it and remove it from the flame. Keep mixing till the time all the lumps are removed. Kamalpreet, we have used maida here or we have used atta here? Maida, all-purpose flour. Okay. So this needs to be little thick, and if it is not so thick, add some more amount of flour. थोड़ा सा thick होना चाहिए. अगर thick नहीं है, तो थोड़ा सा flour आप और add करोगे. So I am adding 2 TBSP more. So you can see here, अगर आपका जो बैटर है बहुत आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए. अगर आपका बैटर थिक नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो बैटर बना वो थोड़ा सा मतलब कम थिक था तो हम लोगों ने इसमें लगभग 2 टेबलस्पून फ्लावर और ऐड किया है. 1/4 कप हमने ऐड कर दिया in total. Okay. Kamalpreet, there is a question here. Yes. That if we want to make a healthy version of it,
can we use the whole wheat flour also or the normal flour? You can try with half an hour. आप half an hour try कर सकते हो. ओके सो अगर आपको एक हेल्दी वर्जन बनाना है इसी का और आप मैदा नहीं यूज करना चाहते इतना ज्यादा तो आप आधा क्वांटिटी मैदा का यू ले लीजिए और आधी क्वांटिटी आप आटे की ले लीजिए दोनों को मिक्स करके बना दीजिएगा तब भी आपका जो है वो बन जाएगा yes So I Priya, have added correct 2 we have used TBSP one more. हमें whipped cream की जो consistency होती है ना कुछ approximately वो consistency चाहिए now. Yes, now it's coming to that consistency. Yes, now this is thick. You can see now. हमें pipeable consistency चाहिए. Kamalpreet, can you get it a little more close so that everybody can see the consistency? Yes. It will get more thick. I will keep it aside for a few minutes and it will. So इसको अभी हमने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया है. Okay, till the time you can ask questions. उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और ओवन में इसको बेक करने के लिए रखेंगे. शिफ्ट कर दो प्लीज स्पॉटलाइट. Yeah, sure. Just a sec. Yes, done. Okay, so there was a question here that ma'am, can we use Desi ghee instead of butter? Butter is basically we are using because that is a thickening agent for this. So no, you cannot replace it with desi ghee. क्योंकि देसी घी थिकनिंग एजेंट नहीं है, बटर थिकनिंग एजेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे बटर यूज कर रहे हैं. Okay, and there is a question here. Do we take it like snacks? Do we take it like? Snacks. Like, can we take it like Yes, snacks? you can consume it like snacks also, and you can consume it as desserts also. Okay, so like it can be used as snacks. आप snacks की तरह भी use कर रहे हैं इसको dessert की तरह भी use कर रहे हैं. That's great. Okay. Okay, so there's a question for how long should we keep it aside? For 5 to 7 minutes, that's it. We want that all the water should be soaked in the maida which we have used. That's why we have kept it aside. जो सारा वाटर कंटेंट है वो अच्छे से सोक हो जाना चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर में, मैदा में, इसलिए हमने उसको साइड में रखा है ताकि वो थोड़ा थिक भी हो जाए और वाटर अच्छे से सोक भी हो जाए. ओके बिल्किश, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही ये सेशन खत्म होगा जो यूट्यूब से है हमारी वीडियो वो हट जाएगी तुरंत एंड वो वीडियो आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर आज रात 9 बजे तक. ओके मतलब 9 बजे तक ऐप के ऊपर अपडेट हो जाएगी ये वीडियो. ओके सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर कि मैम डू वी हैव टू मिक्स इट do we have to do the mixing process on flame itself? You have to mix the water, butter and sugar on low flame, and you will add the flour. You will see there is a boil in the water, a light boil in the water. Then you will add your all-purpose flour, give it a little mix and remove it from the flame. आप पहले क्या मतलब we do करोगे? not have to... No, all-purpose Yes, flour yes. needs to be just little mixed on the flame and then afterwards removing it from the flame. Okay. Yes, Sabi, as we just said, for the healthy version, you can use atta, but you will still have to use all-purpose flour in some way. So you can take half amount of all-purpose flour and half amount of your atta, and it can help you like make it a little healthier. Okay. So there's a question that, ma'am, is it an ancient recipe? Yes, this is a Mexican recipe. This is an old dessert, but you can't say it's very ancient. Okay. So there's a question, are we going to bake it or fry it, or we are going to do both the things? We are going to basically fry it here and bake. I have pre-baked some. So I personally get the best results in frying. In baking, you don't get the best results. But
it's your option. You can try baking also, you can try frying also. So frying में Okay, ज्यादा that अच्छे means रिजल्ट्स आते हैं, बेकिंग में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तो आपकी चॉइस है, जो भी आप चाहो कर सकते okay. तो मतलब दोनों ही चीजें कर सकते हैं अगर आप इफ यू आर समबडी वेरी हेल्थ कॉन्शियस तो आप फ्राई की जगह बेक कर लीजिए, अदरवाइज फ्राई कर लीजिए. हो. हाँ जी. Okay, so there is a question that ma'am, for how many days can we store this? Once this is fried and baked, you can store it for 2 days. But you have to do something for the crunch, like you have to store this in airtight container or in Ziplocs so that the crunch remains. Okay, and when we are using the flour, like the all-purpose flour or the flour, do we have to sieve it? Yes, if you will sieve it, you will get better results and less of lumps. Okay, don't worry, Gorshibi. When we will get to the part, your question will be answered. Okay, we are still not on that part, so I'm really sorry. I won't take this question now. Once we'll get to the part, we'll take your question also. Okay, so there's a question that, ma'am, if there's any problem like lump formation, then what can I do? Then take this spatula and take the batter on a plate and remove each lump. I have to press each lump and remove it. This is my personal trick when I used to when I started using it. Sometimes it is basically the temperature. Sometimes batter gets very thick and sometimes it's get very thin, like it happened right now. So कभी कभी flour add करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, बहुत thick हो जाता है. So at that point, don't add anything. Just add a little amount of water if you're facing that problem. और अगर thin हो रहा है तो वो तो result अभी आपने देख ही लिया. Yes. Lennon, the combo baking course is still is going on. It started, I guess, a day before yesterday, and it is still going on. So if you want to register for it, you can register. And Kamalpreet is the trainer there. I think no, not the like we have the party baking combo going on, right? Kamalpreet? Yes, Yes. party So if you appetizers. want, you can register for that. Okay. Yes, Kamalpreet. So we have a nozzle here. You can see this is a star nozzle. Okay, or you can take this type of a nozzle. इन दोनों में से आप कोई भी nozzle ले सकते हो. And put it in the piping bag. Okay. And we will fill it with the batter. So should I spotlight the other camera? Yeah, you can do that. Sure. You can It see is a little the out of thickness. sight. Okay. Come, please. Yeah, I'm doing it. Is it better now? So you can see. Can we remove some that is in front of like जो सबसे सामने कुछ चीज रखी है पानी इसमें? Actually, that is oil. So. Oh, okay. Yeah, it is fine now. Perfect. So you can see this is thick now. दिख रहा है आपको जिस हिसाब से फ्लो कर रहा है. थोड़ा इससे ज्यादा भी थिक हो जाएगा, that is also fine. It's like we need a pipeable consistency, right? Yes. Okay. And I'm going to put the piping bag. कंप्लीट हल्का सा आप अपना हाथ आगे ला सकते, बस परफेक्ट. आराम से सामने तेल लिए. Okay. So there's a question here that can we air fry it? Air fryer, no, because in air frying it is difficult to keep.
So best is oven and frying. But yes, you can try. It is just difficult to keep in that. That's it. Okay, so अगर Okay, आप so keeping वाला process अगर आप solve कर लें तो you can air fry it also. I will tell you that also. I have never tried this in air fryer, but I will tell you how you can try. So मैं यहाँ पे पहले बटर पेपर ले रही हूँ. Okay. सबसे पहले मैं आपको वही तरीका बताती हूँ कि एयर फ्रायर में आप कैसे ट्राई कर सकते हो और फ्राइंग के लिए भी कैसे ट्राई कर सकते हो. So oil it and pipe it. Just a second, I'll cut the piping bag. Give me a moment. Yeah, sure. Yes, प्रिया, अगर आपका बैटर देखिए इतना थिक नहीं होना चाहिए कि जब आप उसको पाइप करें तो वो पाइप ही ना हो. आपको बस ऐसा थिकनेस रखनी है उसकी कि जब आप पाइप करें तो वो जो इजीली है बैटर वो पाइप भी हो जाए, प्लस उसका जो शेप निकलेगा पाइप होने के बाद वो उस शेप को होल्ड कर सके. इतना थिक आपका बैटर होना चाहिए. यस नीलम, जो हम लोगों ने साइड में अपना बैटर रखा था ना, वो हम लोगों ने बेसिकली इसी चीज के लिए रखा था कि जो भी हमारा बैटर है वो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा कूल डाउन भी हो जाएगा तो काम करने में भी इजी रहेगा. यस अदिति, सो जब आप स्टार्टिंग में जब आप फ्लेम के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी फ्लेम लो फ्लेम होनी चाहिए. आपकी जितनी देर भी आप बैटर से काम कर रहे हैं, आपका फ्लेम लो ही होना चाहिए. जब स्टार्टिंग में बैटर बनाने के लिए रखना है तब लो ही रखना है. यस. सुहेना, कमलप्रीत ने अभी अभी बिल्कुल शो किया कि कैसे आप बैटर को पाइप करते हैं. शी वाज जस्ट डूइंग दैट. Okay, no, it's still very thin. अभी भी थिन है. कैसे पता लगेगा? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने पाइप किया है, सो डिजाइन स्टे नहीं हुआ. दिख रहा है आप लोगों को? इसलिए मैंने पहले बटर पेपर रखा था. तो ट्राई इट ऑन. ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई करने के लिए कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल सही है या नहीं, हम लोगों ने उसको एक बटर पेपर के ऊपर या पैचमेंट पेपर के ऊपर, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. इट कुड बी अ पैचमेंट पेपर ऑल्सो, इट कुड बी अ बटर पेपर ऑल्सो. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. उसके ऊपर आप उसको पाइप करिए. अगर आप देखते हैं कि आपका जो शेप है वो होल्ड नहीं हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका बैटर जो है वो अभी भी बहुत ही थिन है और अभी भी आपको उसको और ज्यादा थिक करने की जरूरत है. Kamal, it can be stored for 2 days. Okay, in an airtight Yes. container, you can store it for 2 days, not more than that. And the batter also you can store. Okay. Gausabi, you don't have to keep it aside for a very long time. Just keep it aside for like 5 or 6 minutes, and that will be it. Okay, so Kamalpreet, there's a question that, ma'am, if we do not have a nozzle, what can we do? You can just pipe it in simple shape, in round shape. That's okay. Okay. So अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप बिना नोजल के भी आप नॉर्मली उसको पाइप कर सकते हैं. So if you have any more questions, please let us know so that we can help you out with it. ये जो मैंने किया था कंसिस्टेंसी चेक आप कैसे करेंगे उसी के लिए किया था. मैं आपको बताती हूँ फाइनल. And always use heavy piping bags for this because normal is not gonna work. फटने का डर होता है normal वाला. So always use heavy piping bags. Okay, can you see it hold the shape now?
अब दिख रहा है आप लोगों Okay, को you शेप can. होल्ड हो गई. Yes, Kamalpreet, we can see. So this is the right consistency. Okay, whenever you're piping, it needs to be done. See this one, okay? जो मैं बना रही हूँ अभी. Single line, release the pressure, go backwards, and if it's not releasing, cut it with a scissor and leave it here. ठीक है, समझ आया ये वाला जो मैंने बनाया अभी? Kamalpreet, it was not visible. Can you just like, Okay, is it now? Yeah, हम it पहले is visible now. लाइन में लेके आएंगे, then backwards, cut it with a scissor and release it here. समझ आया? ओवरलैप करके वहां पे हमने रिलीज किया. Do it in a line, go back little, overlap it a little, cut it and release it there. And you need to use a kitchen scissor for this. समझ आया? Okay, so yes, I think it was very well clear कि आपको क्या करना है, कैसे आपको बनाने हैं. No, Shitali, these- you are not supposed to use baking powder here. Yes, Kamalpreet. And this you can just freeze for some time and then you can keep it in the baking and in air fryer. So ये जो मैंने अभी बनाए थे बटर पेपर पे शिफ्ट कर दो एक बार सलोनी स्पॉटलाइट. Yeah, just a sec. तो ये जो अभी हमने बटर पेपर पे बनाए हैं ऐसे आप बटर पेपर पे सेट करके उसको फ्रीज कर दो थोड़ी देर के लिए ताकि लिफ्ट करने इजी हो जाए एंड देन उसको आप बेक करो और एयर फ्रायर में भी यू कैन ट्राई. टेम्परेचर वुड बी 180 डिग्री सेल्सियस, upper rod on, lower rod on, and if you have fan would also be on. upper rod on रहेगी, lower rod on रहेगी. अगर आपके oven में fan है तो fan भी on रहेगा. Same with air fryer, try it with 180 degree Celsius. Air fryer का भी same temperature रहेगा अगर आपको try करना है 180 degree Celsius. Okay, time रहेगा 15 to 20 minutes. Time would be 15 to 20 minutes for OTG. And once it is done, you will see the golden color. Once it is done, you have to keep it there for 2 to 3 minutes so that it holds the shape. जब oven में आपकी baking हो गई है तब आप उसको oven में ही रखेंगे 2 से 3 ताकि जो उसकी शेप है वो होल्ड करे और उसके बाद फिर आप उसको बाहर निकालोगे. इज दैट क्लियर? थोड़े से मैं आपको पीसेस करके भी दिखा दूंगी ओवन में, बट पहले हम यहाँ पे फ्राइंग कर रहे हैं. Just a sec. Yeah. So your oil should be medium hot. It should not be very hot. Same way in oil also you have to do with kitchen scissors. So you can see here, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बटर पेपर के ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही आप ऑयल में भी करिए. पाइप करिए, प्रेशर रिलीज करिए एंड देन सिजर्स की हेल्प से, किचन सिजर्स की हेल्प से उनको कट कर दीजिए. तो ऐसे आप उनको गैस पे बना सकते हैं. ओटीजी में या एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको बटर पेपर के ऊपर ऐसे उनका शेप बना लीजिए, फिर उनको थोड़ी देर फ्रीज कर लीजिए ताकि आप इजीली उनको उठा सकें. जब आप उठा के उसके बाद फिर आप उनको आपके ओटीजी में या आपके एयर फ्रायर में रख सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, और आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 15 to 20 मिनट्स दोनों चीजों के लिए. ओके Okay, Afreen, for correcting the consistency, we have added little more amount of flour in it. You can just add a little bit of flour and then you can just mix it and fix the consistency. Although this is rare because I think the temperature was quite here where I am working. So if you will just work in your normal kitchen, it would be thick. But I have told you both the methods. If it's thick, how to handle it. If it's thin, how to handle it. Yes. Okay, so there's a question that, ma'am, if we do not have a piping bag,
in that situation, what can we do? Then you would not be able to make this big slices. Then you can make churros by it, uh, pouring it with a spoon. ओके, तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से भी उसको ऐसे अपने बैटर को अपने तेल में ऐसे पोर करके उसके बाद आप बना सकते हैं. उसको आप बोल सकते हो कि आपने बनाया चूरोस बाइट्स, क्योंकि Okay, चूरोस थोड़े churros bites, लेंथ therefore. में स्टिक्स की तरह होते हैं, तो आप अपने गेस्ट्स को बोल सकते हैं कि आपने चूरोस बाइट्स बनाए हैं. Yes, आप churros bites बना सकते हैं अगर आप स्पून के साथ बना रहे हैं. Okay, so there is one more question here. कि ma'am, do we have to preheat our oven also? Yes, yes. Even the air fryer and oven, both you have to preheat. Okay, so we have to preheat it at 180 degrees for how many minutes? 10 minutes. If you have an indicator, then go as per indicator. And if you don't have an indicator, then it needs to be done for 10 minutes. Okay. Okay, so can we make it in the microwave convection mode also? No. Microwave, it will not give the desired results. Okay. So if you don't have OTG or a air fryer, go for frying method. And trust me, frying method is the best. You get the best churros in frying method. Okay. Okay, I have a baking tray and I am lining few for this tray. So freeze करने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली मैं इस पे पाइप कर रही हूँ और आपको मैं थोड़े से बेक करके भी दिखाती हूँ. Okay, sure. Your flame should be medium all the time when you're doing churros. Otherwise, it would be cooked from outside and not from inside. And you can take small noodles also. Yeah, please continue. I will tell it later. No, you continue. Okay, these are big pieces. You can go for small nozzles also if you want to get smaller pieces. Like the thickness should be less, then you can go for smaller nozzles. Okay. So अगर आप चाहें तो आप छोटे नोजल जो हैं उनके साथ भी जा सकते हैं ताकि आपको थोड़े से छोटे एंड पतले से जो वो होते हैं वो मिले. Okay. Mr. Panchal, yes, for the recordings you will have to pay us 5 rupees and recordings will be updated on the app by 9 PM today. आज रात 9 बजे तक रिकॉर्डिंग्स अपडेट हो जाएंगी. एक बार ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद. Kamalpreet, is it possible that we can zoom out a little because अगर आप ट्रे में पाइप कर रही हैं तो वो दिख नहीं रहा है and ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ साइट हो जा रहा है. Okay, मैं ट्रे में पाइप कर रही हूँ but same way से करना है, so I'm not showing it. Do you want to see it? I'll get this aside and I can show you. Yeah, sure. Is it possible that we can zoom out the camera a little? Little difficult, then everything will move. Okay, then let it be. Jazz, the preheating time is always supposed to be the same as your baking time. I mean, temperature. And for the timings, it is going to be 10 minutes. And if you have some preheating time already set in your OTG, then in that case, you can go with that. Otherwise, you need to preheat your OTG for 10 minutes. मिस्टर पांचाल, इसकी पूरी जो रेसिपी है उसका जो PDF है वो ऐप के ऊपर अपडेटेड है. आप जाकर के एक बार ऐप के ऊपर चेक कर सकती हैं. आपको सारे के सारे जो रिटन PDF है इसका मिल जाएगा. रिटन रेसिपी जो है वो मिल जाएगी. If you do not have a piping bag, you can just use a spoon and you can pour the batter directly with the help of your spoon in the oil. Okay? In small quantity.
लाइक ये वाली जो मैं पाइप कर रही हूँ, ये देखना, सिर्फ इतनी इतनी क्वांटिटी में आप स्पून से, जैसे फ्रिटर्स बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी में आप ऑयल में या ओवन में ऐसे स्पून से डाल सकते हो. Yes. Yes, Anuja, you can try that also. That will also work in the same way. Okay. Yes, it is supposed to be fried on low to medium flame. Okay. आपको लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई भी करना है, अदरवाइज अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से पक जाएगा. Keep it low to medium flame. Don't keep it on high. Yes. Low is also, I would prefer that do it on medium flame. That is the perfect temperature, but not high. High is not at all recommended. So आपने देख लिया, मैंने पाइप किया, ओवन मेरा प्री हीटेड है. ओके, तो ये गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हैं. ये वाला जो गोल्डन कलर आ रहा है, ये हमें सारी साइड से चाहिए. तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे. Yes. No, Anuja, if you're using that packet, so in that scenario, you will be able to get this desired shape. But yes, if you're using a spoon, you will not get this type of shape. That is called as, they will be small. Okay. So you can call them as churros bites. Bites are usually small. So they will be churros bites. Okay. Santoshini, so if you're baking it, you're going to first preheat your OTG at 180 degrees for 10 minutes. And then when you are baking it, you're again going to bake it at 180 degrees for 15 to 20 minutes. 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको बेक करेंगे. I'm really sorry, Jazz. It will not be possible for us to show it here. But I think you get the idea. That is very simple. You can just take the spoon, put it in the oil, and that's it. What she wants to know. Gas pe fry kar. Yes. Just a second, Kavitri. So जब आप गैस के ऊपर फ्राई कर रहे हैं, उस टाइम पे जो फ्लेम रहेगी वो लो से मीडियम होनी चाहिए. ओके. हर किसी के गैस में बर्नर्स की सेटिंग होती है, एक लो, एक मीडियम, एक हाई. तो जो मीडियम वाला फ्लेम होता है ना बर्नर में आपके, आपको वो फ्लेम रखना है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, जो जिसमें मैं कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक है. सो इसमें सेटिंग्स है 1 2 3 4 5. तो करंटली मीडियम रहेगा 3, तो मैंने इसकी सेटिंग्स 3 पे रखी हुई है. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, सो दिस इज स्टिल 5, so I have kept it on 3. So same way you can judge for a gas which is the medium flame of your burner. I think this will help, Saloni. Yes, I think it was a great explanation. Okay, so there's a question that, ma'am, if we are frying it, how much time does one batch takes to get perfectly cooked from inside also? It generally takes approximately 5 to 10 minutes. गोल्डन होने में ना, क्योंकि ये पीसेस थोड़े थिक हैं. जब थिन होते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, थिक होते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. ओके, मैंने आज ही प्रिपेयर करके रखे थे. जस्ट Okay, so you can see here कि हमारे जो फ्राइज हैं आप देख सकते हैं वो हल्के से गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं. तो आपको ऐसे ही रखना है. Is my video getting stuck? नहीं, आपको ऑयल लेना है. Okay. Saloni, can you just shift the spotlight? I want to show them something. Yeah, sure. Just a sec. So this was made on my family demands because they were listening churros since morning. So they had this after lunch. This was after lunch dessert. You can see these are thin. And can you see the color? So thin जो होते हैं वो बहुत जल्दी brown हो जाते हैं. You have to be very careful. This was actually a little more. It was cooked little more. इतना नहीं करना है golden.
but you can get an idea of how thin you can go and how thick you can go. So I have few pieces here also. So I have few pieces here which I have set in a plate. So I'm going to try this in air fryer also. So I am preheating the air fryer for 5 minutes first. Okay, Kamlesh, there's a question here that ma'am, what type of dips can we use with it? You can simply use Hershey's chocolate syrup, Nutella, or you can use any caramel syrup, or you can use any fruity crush along with this if you want to turn this in a fruit flavor. And you can serve it with fresh fruits and some maple syrup on top if you don't want to go with ice cream. These are the serving suggestions, what I would recommend. Rest, it's all about your creativity. जैसे भी आप चाहो कर सकते हो. Okay, so this one is perfectly cooked. I will take this out. You can see the color. Please shift the spotlight. Sure. Done. ये वाला perfectly golden हो चुका है. Golden color चाहिए, हमें dark brown नहीं चाहिए. So this is nice golden color. So I'm taking this out. Others also are following. Okay, this is also done. Let's take this out also. So you can keep this on a paper towel to get rid of the excess oil. So ये पे रख सकते हो ताकि excess oil निकल जाए. So you can see here, यहाँ पे. So you can see all of them are nice golden color. So we will keep this aside, the hot oil first. So you can see here, जो हमारे सारे के सारे जो चूरोस थे वो कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं. सो ऐसे ही आपका उनका कलर होना चाहिए, तभी वो अंदर से बाहर से सब जगह से पक गए होंगे एंड प्लस काफी क्रंची से हो गए होंगे. Okay, so one final thing we are going to do here, which is cinnamon sugar we're going to make now, which is the flavor of churros. So जो main element है वो हम यहाँ पे अब prepare करने वाले हैं. So मैं यहाँ पे cinnamon ले रही हूँ. This you can work as per your taste, or I would suggest whatever ratio of cinnamon you are taking, you should take double of sugar. So जितना भी आप यहाँ पे cinnamon powder ले रहे हैं उससे double आप sugar लीजिए. That is the perfect ratio. And I would suggest to take castor sugar instead of powder sugar because that coats up very nicely. अगर आपके पास castor sugar है तो आप castor sugar लीजिए. Castor sugar से बहुत अच्छे कोट होते हैं churros. अगर नहीं तो powder sugar लीजिए. Normal sugar इसके लिए work नहीं करती कोट करने के लिए. So let's start coating this. So you can see here, यहाँ पे हम लोगों ने cinnamon powder यानी कि जो दालचीनी पाउडर होता है वो लिया है एंड हम लोगों ने लिया है castor sugar. Castor sugar और cinnamon powder आप लेंगे, जितना भी आप cinnamon powder ले रहे हैं उसका जस्ट आप डबल वो लेंगे.
ग्रैनुलेटेड Castor शुगर या sugar. फिर कैस्टर शुगर लें. ओके, एंड देन उसको मिक्स करके आपको उसको अच्छे से अपने च्यूरोस के ऊपर कोट करना है. हमने इसीलिए यहाँ पे नहीं ली थी बैटर में ज्यादा शुगर, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसको शुगर से कोट कर रहे हैं तो बहुत स्वीट हो जाएगा. And this needs to be done when it's hot, otherwise it will not coat properly. तो जब ये कोटिंग करनी है आपको तब करनी है जब आपके चूरोस गर्म होंगे, अदरवाइज आपकी कोटिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी ठंडे होने के बाद. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप सारे के सारे जो च्यूरोस हैं उनको अच्छे से कोट करेंगे. एंड आप यहाँ आपको अच्छे से कोट करना है उन्हें. एंड हम लोग ने अपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो बैटर बनाया था उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा चीनी नहीं ली थी, इसीलिए हम लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा चीनी नहीं ली थी, क्योंकि हम ऑब्वियसली बाद में उसको कोट करने वाले. पहले भी ज्यादा चीनी हो जाती तो बहुत ही ज्यादा मीठा हो जाता. Okay, so there's a question here that, ma'am, can we use the icing sugar also? Yes, you can go for icing sugar also. That's also fine. Okay, so I'm trying 2 pieces in air fryer also, hair and live only. So हम air fryer के भी results देख लेंगे. Okay, there's a question that, ma'am, what can we use instead of the cinnamon powder? You cannot use anything except this. This is the original flavor of churros. This is the base of churros. So यही यूज करना है, इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते. Okay, there's a question that, ma'am, are churros supposed to be soft from inside or they are supposed to be crispy? They are supposed to be soft from inside and crispy from outside. Okay. Yes, Santoshini, you are absolutely right. If you're taking 1 tablespoon of cinnamon powder, you're supposed to take 2 tablespoons of sugar. That ratio is absolutely correct. Okay, so if anybody has any more queries, please let me know. Yes, Poonam, we just took this query and we just said that yes, the churros are supposed to be soft from inside and they're supposed to be crispy from outside. Same when you will get the baked ones, you have to do the same procedure with them also. You have to coat it with the cinnamon sugar. Let me drizzle it with some chocolate syrup. First of all, please tell me, does this look like churros, what you see in images and everything? Okay, size are a little Yes, it uneven, does. but बाकी reviews बताइए please आप अपने. I think it looks absolutely like that. And I so want to have it. So yes, everyone, let us know कि आप लोग को ये कैसे लग रहे हैं अभी. Do they look exactly like you have always seen them? Okay, we'll do that in the end. Don't worry, guys. We'll do that. We will break one of one of the churros and show you the texture, like how it is supposed to be. Okay? Don't worry. One batch is there in oven and one batch is there in air fryer. Don't worry, I will show you that results also. एक बैच ऑलरेडी ओवन में चल रहा है, एक बैच एयर फ्रायर में भी चल रहा है. थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको दोनों दिखा दूंगी. Yes. And here people are saying that it looks really yum. Please shift the spotlight. Till the time we can take questions if we have any. I just need 10 more minutes so that I can show them. Yeah, sure. Just a sec. Yes, I have shifted the spotlight.
If you have any questions, please, you can ask now. We have time till the time it's getting baked. Okay, so अगर किसी के कोई भी questions हैं तो please let us know ताकि हम आपको बता सके, आपके सारे questions को solve कर सकें and आप अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें सीख के जा सकें. And Kamalpreet, a lot of people are saying that these look absolutely yum. Thank you so much. Thank you. Yes, Chetna, don't worry, we will do that, but we will do that in the end. Once we have all our batches out, then we will break one of it and we'll show you how it looks from inside. Yes. Yes. Jala, please don't worry. You can get the recording of the session also, and also the product list, and also the product that I used here. You can go on the Pankhuri app and you will find the PDF there. You will find the recording there. You will find all the products there. So don't worry about it. Okay, so do we have any more questions here, ladies? Who your questions हो तो please हमें बताइए. We'll be more than happy to help you out. कैस्टर शुगर थोड़ी सी ना दरदरी सी होती है, जैसे पाउडर शुगर बिल्कुल पाउडर जैसी होती है, वो हल्की सी दरदरी होती है कैस्टर शुगर. So do we have any more questions, ladies? Looks like हमने सारे questions solve कर दिए हैं. Oh, that's great. तो सबको सब कुछ समझ आया, सभी बनाने वाले हैं और अपनी पिक्चर शेयर करने वाले हैं. Yes, I think अगर सबको सब कुछ समझ में आ गया है तो I hope कि मुझे कल तक ग्रुप में काफी सारे पिक्चर्स मिलने चाहिए, काफी सारे पिक्चर्स आने चाहिए कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया. हम लोग एक्सपेक्ट कर आज रहे हैं, संडे कमलप्रीत भी, है, मैं भी. वीकेंड है, तो आई होप कि आज ही सभी डिनर डेजर्ट के लिए बनाने वाले हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इजी. Ingredients are available at home. If you don't have OTG, you can simply switch on your gas and you can fry it. So this is very very easy. Is that right, Saloni? Yes, it's absolutely right. सारे के सारे ingredients, I think ये तो सबके घर पे होगा, सबको मिल जाएगा. मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं आज बनाऊं, बस आज मैं टाइम तो निकाल के सोच रही सनोली हूँ बनाई प्लीज हूँ. ट्राई. और आपको इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ जो एफर्ट है वो थोड़ा सा फ्राइंग के लिए है. फ्राइंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बैटर बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एंड फ्राइंग के लिए बस थोड़ा सा टाइम लगता है. जस्ट सिंपल 2 स्टेप्स, मेक द बैटर एंड फ्राई इट. दैट्स इट. Yes, yes. Chahat, I just said na, we will show you. Why are you worried about it? Chahat is very इट्स इन द excited. She is oven. like, डू यू please वांट टू don't सी? मेरे को दिखाओ, एक break डू यू वांट टू सी? ये देखो, ओवन मेरा ऑन है. ओवन में दिख रहे हैं आपको? Yes, I think we can see it. So it is in the oven, and I also have a air fryer behind me. So इसमें भी मैंने 2 pieces. फर्स्ट टाइम मैंने कभी ट्राई नहीं करे हैं चूरोस एयर फ्रायर में, बट आज मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एयर फ्रायर में भी ट्राई कर लिया कि कैसा रिजल्ट आता है. अगर अच्छा आया तो मैं भी आगे से इसी में ट्राई करने वाली हूँ. Air fryer is like more healthy. अभी मैं अगर चूरोस बनाऊं तो मुझे मेरी मम्मी से बचा के रखना पड़ेगा, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा ऑयल नहीं अलाउड है. सो मुझे बड़ा बचा के रखना पड़ेगा उनसे. तो आप उनके लिए एयर फ्रायर या Yes. ओटीजी में बना सकते हो. हाँ, मैं भी सोच रही हूँ ओटीजी में बना के आई विल बी लाइक, अब ये यू कैन हैव. So yes. Or what you can do to make it more healthy, just a small, just to make it little healthy. बहुत ज्यादा healthy नहीं बनेंगे, but जब भी कोई चीज, I think ये बहुत लोगों को पता होगा, still I'm sharing it here. जब भी आप कोई चीज फ्राई करते हो, उसको जब आप हल्का सा एयर फ्रायर में रख देते हो like 3-4 minutes के लिए, तो जो excess oil होता है वो एयर फ्रायर में निकल के आ जाता है. If you know this, and if you don't know this, so do try this. Oh, that's great. मैं अब मेरी जितने घर में मेरे लोग खाते हैं ना ऑयल, आई फील लाइक आई नीड टू गेट सम एयर फ्रायर कि हाँ ठीक है अब खाओ आप.
Chahat, it will be very difficult for me to repeat the whole process because 1 घंटे में हमने ये सब कुछ बनाया है. It will be really difficult for me to repeat the whole process. But you can always watch the recordings that are going to be available on the app. Okay. Yes. Also, Kamalpreet, can you share your Instagram handle with us? What is it? Yes, Can you it's please share it? sugar.maniacs. 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 And you can Sugar always dot. follow me on Pankhuri also. Sugar.maniacs. Maniacs. ACS. Okay. Sure. तो पंखुड़ी So I've ऐप पे shared भी it here मेरा also. प्रोफाइल है, आप वहां जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी सेम नाम Yes, से पेज है, and फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो. आप सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं. Okay. Nadira, जो cinnamon powder we have used here, that is the most basic, and that is the that is the actual Main flavor element. of your churros. Yeah, that's the main element. So you have to use a cinnamon powder. There is no replacement for a cinnamon powder here. Yes, Jaya, tell me. You have wrote my name. Tell me what happened. Okay. So, Kamalpreet, till this is happening, can you show us जो हम लोग ने भी मतलब फ्राई करके बनाया है? Can you break it हाँ now? जी, I प्लीज think shift the थोड़ा सा time spotlight. हो गया है. Shift the spotlight. Sure, Just sure. 5 more minutes and it would be done. Okay, sure. तो इसको मैं गार्निश भी कर रही हूँ साथ में. पहले आप ऐसे देख लो, एंड हल्का सा मैं इसको गार्निश भी कर रही हूँ. And I will Oh, give it you a looks so clue yummy. also. Now I feel like I need to make it, and the Nutella that I have, I need to use that. And Just make it. Saloni, you were talking about something in the starting. So once it is done, Yeah, yeah. what you can do, you can make it a hole from here and pipe a small amount of Nutella or chocolate from here. जैसे हम डोनट्स में जनरली फिल करते हैं, तो सबसे छोटी वाली नोजल आती है. अगर नहीं है तो पाइपिंग बैग को कट करके यहाँ पे हल्का सा होल करके इसके अंदर आप फिल कर सकते हो चॉकलेट. So this would be wow. chocolate filled churros. Oh, that's so amazing. Okay, I will try. ये सब try करना है मुझे. मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वजह से भी आई लाइक अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद तो मैं पता नहीं क्या ही क्या बनाने वाली हूँ. I miss baking. Okay, so there is a question here. Can we use Yes, vanilla please. essence for flavor also? Yes, that's totally fine. Just add it in the water. And don't add more than half TSP for this recipe. 1 cup के लिए, 1 cup water के लिए half TSP से ज्यादा मत यूज करना. वनीला एसेंस जब ज्यादा हो जाता है तो एक बिटर टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है. When the vanilla essence is excess, it will start giving a bitter taste. So don't use more than half TSP for 1 cup of water. Okay. So there's a question that, ma'am, are there any more variations also in the same? And if there are, can you please let us know about it? Variations is just that you can serve it with different things. Like just stack it like this and serve it with fresh fruits and maple syrup. So ऐसे आप stack करके ऊपर fresh fruits, whipped cream और maple syrup, वो आपकी choice है. fresh fruits के साथ whipped cream या fresh fruits के साथ maple syrup. That is 2 variations. You can serve it with chocolate dip just like this. You can serve it with ice cream. You can serve it with Nutella. So everything would be dessert. And just one which I told you, you have to make thick for that. Just make a small hole in that and pipe the liquid chocolate. So these are 5, 6 different variations what you can do, servings. And one variation which I told you, chocolate filled churros you can make. I hope this is clear. Okay. Yes, I think it is clear. And I think
Suhena, your question is answered, and now you know a lot of variations also. Okay, so So Gurpreet, can we the break? churros are not done in the uh, oven yet, but still I'm going to show you. Just थोड़े से और golden करने हैं, but फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. Yeah, you were saying something, Saloni? Yeah. I was just saying कि जब तक उसमें bake हो रहे हैं, तब तक you can just show us this churros थोड़ा सा तोड़ के. अच्छा ठीक है, ये आप देखो हो गए हैं. जस्ट थोड़ा गोल्डन कलर ऊपर से आना है. ओके, so this is the situation in oven. So I'm doing a midway rotation for this. Okay, so let's have a bite of this. Shift the spotlight, Saloni. So आप लोगों को सबको मैं Sure. jealous करके अभी इसकी bite लेने वाली हूँ. So Just a sec. can you hear the crunch? Yes, we can. I am jealous. And it's equally soft from inside. The upper part is crusty, and inside it's very soft. I'm really thinking of getting some ice cream with this right now, because with vanilla ice cream, it's just heaven. Trust me, guys. In whole lockdown, from the first lockdown till this lockdown, which was recent, I have made this churros at least in 100 times, somewhat like 100, 200, 300 times. So this is the best thing to go with ice cream. तो आइसक्रीम के साथ जाओ, इसको खाओ, बहुत मजा आता है. तो हमने 2 पीस बनाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, एयर फ्रायर इज गुड रिजल्ट. एयर फ्रायर से आ गए हैं. Just I feel the upper part is quite crusty. I need to check from inside also. Okay, मैंने सॉरी ये वाला पार्ट ना ऑयल नहीं किया था, तो थोड़ा निकलने में डिफिकल्टी हो रही है. बट once it will be cool down, it will release automatically the butter paper. So same way you have to coat it with cinnamon sugar. And if it's not getting stuck in the baked one, just apply some melted butter. अगर baked ones पे या air fryer पे stick नहीं कर रही है ना sugar, थोड़ा सा आप उस पे melted butter लगा के फिर stick कर दो. And let's break this and see what is the situation inside. Okay, this is nicely cooked. Let's have a bite of this also. It's very, very hot. This is also good, but this was more soft and inside comparative to air fryer. ये वाले भी बहुत अच्छे बने हैं air fryer में, but अंदर से इतने soft नहीं बने जितने ये वाले soft बने थे जो हमने fry किए हैं. So you can try this also if serving it with ice cream, because ice cream will make it anyhow soggy. So you can go for a healthier version of churros with an unhealthy thing, which is ice cream. Okay. Or we can get the ice cream that was shown on Shark Tank, जिसमें आपको बहुत सारा प्रोटीन वगैरह भी मिलता है. Have keto ice cream. We'll be healthy. We'll be healthy. I'm trying my hands on keto products, so have keto ice cream. Health conscious. Okay, so this is also done. You can see this, the baked one. Please show the spotlight. Sure. This tray is just out from the oven. So हम ये वाला piece एक बार देख लेते हैं. So इसको आप और golden कर सकते हो. That's totally fine. But even this is done. So same problem. When it will cool down, it will release easily. When it's hot, it will not leave the base easily.
So don't try to demold it just like me when it's hot. Yes. So जब आपका ये पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप उस पेपर में से निकल जाएगा. अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा पेपर के साथ भी वो बाहर आ सकता है. नहीं दिशा, अभी we are not holding any healthy class ice cream, but we might hold it in future. So अगर ऐसा कुछ होता है, so you can just follow us on Instagram. Yeah, even I am not the expertise in that. I'm just trying my hands right now on that. But if I get success, I will surely bring some class for you. Yes, for sure. I think we can. We have a teacher and we have a trainer here. She is very good with ice cream and with chocolate making. So I think we can request her also if she knows any of these healthy ice cream wali cheese. We can get a class on healthy ice creams also. So let's take a bite of this one also, the oven one. This is amazing. The oven one, please shift the spotlight. Yeah. Proper crusty from outside, properly soft from inside. Light थोड़ी ज़्यादा है, golden color proper दिख नहीं रहा. But yes, this is nicely cooked and this is nicely crunchy from outside and soft from inside. Same as the fried ones. Just the face of both are different. क्योंकि ये base flat है, तो ये flat हो जाते हैं जब bake होते हैं, and this gets completely round. Otherwise, taste दोनों का similar है, and this is baked, that is fried. So Okay. I hope everything is clear. Air fryer के भी results देख लिए, oven के भी देख लिए, frying के भी देख लिए. Yes, I think everything is clear. I think सारी की सारी चीजें हम लोगों ने cover कर ली, and I think everybody really liked the session. So thank you so much, Kamalpreet, and yes, people loved the session. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Saloni. Thank you. So thank you, Kamalpreet, for joining us today, and please send me the pictures ताकि मैं group पे भी भेज दूँ, and I hope to see you in the next session. Yes. Bye. Bye. Thank you, everyone. Bye. So yes, everyone, thank you for joining us today. I hope you really liked the session. If you did, please do like and subscribe to the YouTube channel because we come live twice a week. And I hope कि आप लोग ऐसे अच्छे sessions miss नहीं करना चाहेंगे. So do subscribe, and I hope to see you in the next class. Till then, bye-bye. Take care and have a great day, guys. Bye. Bye, Kamalpreet. Bye.